By believing in their words, it can give something. But anyway, there is a difference when something is told to us, it is one story, and the another story if I really have my own realization regarding this point. तो वरिष्ठ भक्त हमें बताते हैं कि कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे, मगर इस दो बातों में फर्क होता है कि आपको कोई बात सिर्फ बताई गई है या किसी बात को आपको स्वयं साक्षात्कार हुआ है. But anyway, even if our seniors they tell us proper things in order to support us emotionally and so on spiritual path, anyway it is very helpful. तो तभी भी हमारे अगर वरिष्ठ हमें कुछ बताते हैं हमारी भक्ति में प्रगति के लिए, हमारे मन और हमारी भावनाओं को दृढ़ करने के लिए, तो वो हमारे लिए सहायक है. But it cannot replace the need to have our own realizations in spiritual life. मगर ये कभी भी साक्षात्कार की जगह नहीं ले सकता हमारे आध्यात्मिक जीवन. For example, in ISKCON disciple course there is very nice example. We have appendixes in this manual, and there is one statement from ISKCON law that actually before accepting someone as his spiritual master, one has to develop faith that by following these instructions I will be delivered from material world. तो जो इस्कॉन में शिष्यों के लिए कोर्स होता है, उसके पुस्तक के अपेंडिक्स में पीछे की तरफ एक इस्कॉन लॉ, इस्कॉन के कानून जो है उसमें एक इंगित किया गया है कि दीक्षा लेने से पहले एक शिष्य को एक गुरु में ये विश्वास होना चाहिए कि उनके जो वचन हैं, उनके जो शब्द हैं, वो उनको तारेंगे. There are so many spiritual masters in ISKCON, you can choose according to your taste, taste. ISKCON में कितने सारे गुरु हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, अपने स्वाद के रुचि के अनुसार. No, I'm telling taste. Of course, Vishwas is much more important than taste, but it is reality that some people they choose spiritual masters just according to their taste. ये मैं समझना होगा. How do they feel? How do they feel? ये मैं समझना होगा कि गुरु में श्रद्धा, गुरु में रुचि से, स्वाद से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. कई लोग सिर्फ इस जरिए से, इस बेसिस पे अपने गुरु को स्वीकार करते हैं कि उनको उनसे टेस्ट आता है, कि उनको कैसा महसूस होता है. But these feelings they come and go. और ये जो हमारे भाव हैं ये आते हैं और जाते हैं. And this vow when we accept spiritual master, it is very important vow. We cannot abandon this vow. Otherwise it is great aparadha. It is big problem for our future. और जो गुरु को स्वीकार करने का संकल्प है, ये बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है. इसको हम छोड़ नहीं सकते. अगर हम इसे छोड़ते हैं, हम अपने गुरु के प्रति अपराध करते हैं और हम हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत समस्या खड़ी करते हैं. So that's why we need this real foundation, foundation of our spiritual life. And in this particular case, this foundation is our faith that this particular person is eligible and qualified to take us back to Krishna. तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का ठीक आधार हो. तो यहाँ पे वह आधार है, वह श्रद्धा. ये श्रद्धा होनी चाहिए हमारी कि ये व्यक्ति अधिकृत है और ये व्यक्ति एलिजिबल है मुझे कृष्ण के पास वापस ले जाने में. So for spiritual life, what we need? We need the desire itself to go back to Krishna. This desire to go back to Krishna, and we need a person to whom we believe. Not just blindly believe. We have some reasons to have this faith that this particular person can help us to fulfill this desire. तो आध्यात्मिक जीवन में हमें इच्छा चाहिए कि हमें कृष्ण के पास वापस जाना है, और हमें यह विश्वास चाहिए कि ये जो व्यक्ति हैं, और ये विश्वास किन्हीं ठोस कारणों पे होना चाहिए. एक अंधा विश्वास नहीं कि ये जो व्यक्ति हैं, ये मेरे गुरु, ये मुझे कृष्ण के पास वापस ले जा सकते हैं. And if we have these two, then while following this spiritual path, we will be facing, of course we will be facing different challenges, but we will be able to deal with these challenges because we have faith in that particular person, and moreover we have desire itself to go back to Krishna.
अगर हमारे पास ये श्रद्धा होगी भी तो भी आध्यात्मिक जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, परंतु इस श्रद्धा होने के कारण हम उन कठिनाइयों को पार कर पाएंगे और हमारे पास जब ये इच्छा होगी कि हम भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं तो भी वो पार होंगी. And another situation, opposite situation, when, for example, some junior devotees, they are forced or forcibly inspired by seniors that you accept such and such Guruji because he is Uttama Adhikari. तो कभी ऐसी परिस्थिति भी होती है कि कुछ वरिष्ठ भक्त एक नए भक्त को मजबूरन एक गुरु स्वीकार करने को कहते हैं क्योंकि वह उत्तम अधिकारी हैं. And that Guruji, he really can be Uttama Adhikari, but it is not sufficient. The faith in one's heart is also needed. Otherwise, there is no contact, this internal contact with Uttama Adhikari. तो हो सकता है वह गुरु उत्तम अधिकारी हो, परंतु उस भक्त को उस गुरु में श्रद्धा की भी आवश्यकता है और बिना इस श्रद्धा के वह उनसे संपर्क नहीं कर पाएगा. Someone tells us he is Uttama Adhikari, but it is his faith, it is not our faith. It means it is a fuel in someone's car, it is not the fuel in our car. अगर कोई हमें बता रहा है कि ये गुरु उत्तम अधिकारी हैं तो ये उनकी श्रद्धा है, ये हमारी श्रद्धा नहीं है. ये ऐसा है जैसे किसी और की गाड़ी में पेट्रोल है, हमारी गाड़ी में वो पेट्रोल नहीं है. And if this fuel in someone's car, how we can go? अगर वो पेट्रोल किसी और की गाड़ी में है तो हम कैसे जा सकते हैं वापस? Anyway, so one goes through this process of devotional service from Shraddha to Anartha Nivriti. Actually, one of our spiritual masters in Russia, he told that this period from Shraddha to Anartha Nivriti, it is not actually spiritual advancement, it is the purification process. तो भक्ति का जो मार्ग है हमें श्रद्धा से अनर्थ निवृत्ति तक ले जाता है. तो रशिया में एक गुरु जन हमें बता रहे थे कि श्रद्धा से अनर्थ निवृत्ति तक का जो रास्ता है ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है, ये सिर्फ शुद्धिकरण है. And during this process one gradually gets practical experience how Krishna protects him. और इस प्रक्रिया के दौरान एक भक्त समझता है कि कृष्ण रक्षा कैसे करते हैं उसकी. So it means it is not just that we declare that Krishna protects us, but it really should be confirmed in our life. And Krishna, he arranged different situations. It takes time, it can take years or maybe decades just to get some situations in our life. And on the basis of this experience, we can really tell, yes, he protects. He is my well-wisher. यह सिर्फ हम घोषणा नहीं करते कि कृष्ण रक्षा करते हैं, ये हम साक्षात्कार करना चाहिए हमें अपने जीवन में कि कृष्ण असल में हमारी रक्षा करते हैं. और इसमें कभी कभी हो सकता है सालों लग जाएं और दशकों लग जाएं, जैसी परिस्थितियां आए जिसमें हम ये महसूस कर पाएं कि हाँ कृष्ण रक्षा करते हैं. So today's verse is about Krishna's intention. His intention is such that he is always our well-wisher. यहाँ पे इस आज का श्लोक जो है वो कृष्ण के मनोभाव, आंतरिक भाव के बारे में है. और कृष्ण का आंतरिक भाव ये है कि वह हमारे सुहृद हैं. Suhridam Sarvabhutanam means he is not only well-wisher of his devotees, especially he is well-wisher of his devotees, but he is well-wisher of everyone. सुहृदम सर्वभूता नाम, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो सिर्फ भक्तों के सुहृद हैं, वो सबके सुहृद हैं. हाँ कि वह विशेष सुहृद हैं अपने भक्तों के, परंतु सुहृद सबके हैं. So, and what should do those who are not devotees, or for example those who are devotees but not so serious devotees, what is their chance? तो जो लोग भक्त नहीं हैं और कुछ लोग जो भक्त हैं मगर बहुत गंभीर भक्त नहीं हैं, तो उनकी परिस्थिति, उनका चांस क्या है इसमें? And the chance is given because Supreme Lord, he gave this process of bhakti yoga, and some aspects of this process are really powerful, like for example this Kartika month that has started. तो मौका हर किसी को दिया जाता है और भगवान ने हमें ये भक्ति योग का प्रोसेस दिया है और जिसमें बहुत सी प्रक्रियाएं हम पालन कर सकते हैं, जैसे कि ये है कार्तिक का महीना. And in Nectar of Devotion it is told that even small service which is done during this period of time, which is called Kartika month, even if it is done by so-called non-serious devotee, anyway it is considered as a service which was done by a serious one.
तो भक्ति रसामृत सिंधु में यह कहा गया है कि इस महीने में अगर कोई छोटी सी भी सेवा करता है, ऐसा भक्त भी जो तथाकथित गंभीर नहीं है, तो वो भी अगर कोई छोटी सी सेवा करता है तो उसे ऐसे लिया जाता है जैसे उसने गंभीरता से की है. Just small service and it is considered like something really valuable. Krishna wants everyone to become closer to him. तो कोई छोटी सी भी सेवा करता है तो उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. कृष्ण चाहते हैं कि हर कोई उनके निकट आए. This process of devotional service very nicely described in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 22. तो यह जो भक्ति योग की प्रक्रिया है ये बहुत अच्छे से बताई गई है श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22वें अध्याय में. And this chapter 22 entitled very simply the process of devotional service. तो इसका शीर्षक बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल है कि भक्ति योग की प्रक्रिया. So we have this verse from Madhya Lila 22-25. तो ये मध्य लीला में ये श्लोक है 22 से 25. 22-25. 22वां अध्याय 25वां श्लोक. Tata Krishna Bhajjakare Guru Rasivana Maya Jala Chute Paya Krishna Racharana. And do you have Gita base on your mobile? No? Don't have. I can read slowly, not a problem. Not a problem. It is very simple verse. No need. Actually, no need. No. Just by small portions. Yeah, sure. Just listen. If the conditioned soul engages in the service of the Lord, अगर एक बद्ध जीव भगवान की सेवा में संलग्न होता है and simultaneously carries out the orders of his spiritual master, और साथ के साथ अपने गुरुओं के आदेशों का पालन करता है, and serves him, उनकी सेवा करता है, he can get out of the clutches of Maya वह माया के चंगुल से बाहर निकल सकता है and become eligible और अधिकृत हो सकता है for shelter at Krishna's lotus feet. कृष्ण के चरण कमलों के शरण लेने के लिए. So you see two conditions. The first one is to do seva, and the second one is to do seva not just whimsically, according to my understanding, like what Krishna likes, but to do seva according to the instructions of spiritual master. तो इसमें दो कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि एक तो व्यक्ति को सेवा करनी है और दूसरा सेवा मनगढ़ंत तरीके से नहीं करनी, जो मेरे को अच्छा लगे मैं वैसे करूं. सेवा करनी है गुरु के आदेशों के अनुसार. Srila Prabhupada gives very simple explanation. This process of devotional service is described in books like, for example, the some medical sciences. They are described in particular books, or there are law books, for example, also. तो श्री प्रभुपाद बहुत साधारण उदाहरण देते हैं कि ये जो भक्ति योग की प्रक्रिया है यह वर्णित है जैसे कि एक डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई की बुक होती है या फिर लॉ बुक होती है, वैसे ही वर्णित है. But if one wants to become a doctor, or if one wants to become a lawyer, he cannot get this qualification just by reading books. मगर अगर किसी को एक चिकित्सक बनना है या लॉयर बनना है तो केवल पुस्तकें पढ़ने से वह नहीं बन जाएगा. He has to find a reliable practitioner, and he should work under his guidance. तो उसको एक विश्वसनीय प्रैक्टिशनर, विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए होगा जो पहले से चिकित्सक या लॉयर हो, और उसके अंडर उसको कार्य करना होगा. So the same situation is in spiritual life. One should be under someone's guidance, otherwise he will be carried out by his own speculations and concoctions. तो यही परिस्थिति हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी है कि उसको किसी के आदेशों को पालन करना होगा, वरना वह अपने मन के विचारों, मनगढ़ंत विचारों द्वारा बह जाएगा. So, and what is the reward? The reward is the shelter of Krishna's lotus feet. और इसका पुरस्कार क्या है? पुरस्कार है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल. And it is very nice because you see, conditioned soul, it is called in Sanskrit, one of the characteristics of conditioned soul is that conditioned soul is sarvagata. Sarvagata. और ये बहुत अच्छा है कि शास्त्रों में जो बद्ध जीव है उसका एक लक्षण बताया गया है, सर्वगता. And sarvagata means that the soul travels everywhere, or better to say, roaming everywhere. सर्वगता का यह अर्थ है कि हर जगह घूमता फिरता है. We have this
8,400,000 species of life. It means material energy gives variety about in which form one can reside. तो भौतिक प्रकृति ने हमें 84 लाख योनियां दी हैं और वो हमें विकल्प देती है कि आप कहाँ पे रहना चाहते हैं इसमें. 8,400,000 species of life means 8,400,000 attempts to enjoy material energy. 84 लाख योनियों का अर्थ है 84 लाख प्रयास भौतिक जगत को एंजॉय करने के. So this variety is given, but during all these travelings, all these journeys, conditioned soul is never satisfied. ये विविधताएं भौतिक प्रकृति एक बद्ध जीव को देती हैं, परंतु इस सारी यात्रा में बद्ध जीव संतुष्ट नहीं होता, खुश नहीं होता. There are human life, forms of life, and animals and birds and insects, and in all these cases, living entity sometimes experience flickering happiness, but mainly there is no ultimate satisfaction. तो बहुत सारी योनियां हैं, कुछ मनुष्य योनियां हैं, कुछ पशु योनियां हैं, पक्षी योनियां हैं और कीड़ों की योनियां हैं, परंतु इन सभी योनियों में कोई भी जीव कभी भी परम संतोष नहीं पा पाता. It can be proven very easily. Just go on the street and you will see so many unsatisfied dogs and cows. तो इसको प्रूव करना बड़ा ही आसान है. आप बाहर सड़क पे चाहिए तो आप देखेंगे कि कितने सारे असंतुष्ट पशु, कुत्ते इत्यादि आपको दिखेंगे. And we also can say that people that we see on the streets, it is not that everyone is smiling. और बाकी अन्य लोग भी जो आपको दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि सब हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं. But when one achieves lotus feet of Krishna, in Bhagavatam there is a comparison that it is like someone after long journey, he goes back to his home and now he feels happiness and he is relaxed and everything is good in his life now. तो ये भगवान के चरण कमल जब कोई प्राप्त कर लेता है तो उसको शांति प्राप्त होती है. भागवतम में उदाहरण आता है कि बहुत लंबी यात्रा के बाद अगर कोई घर पहुंचता है तो उसे कैसे शांति प्राप्त होती है, उसे आराम महसूस होता है और वो खुश महसूस करता है. Before, when he was traveling, he was tired, but now he is not, because he reached his home. जब वो यात्रा कर रहा था तब वो बहुत थका हुआ था, परंतु अब वह थका हुआ नहीं है. क्यों? क्योंकि वह अपने घर पहुंच गया है. So let's use the opportunity which is given by Kartika month. Just let's attend temple programs and let's do our seva for Krishna nicely. तो हम इस मौके का फायदा उठाते हैं जो कार्तिक मास का मौका हमें कृष्ण ने दिया है. हम मंदिर के विभिन्न प्रोग्राम्स को अटेंड करें और कृष्ण के लिए जो सेवा है उसको अच्छे से करें. And we also meditate on this Damodar Lila when Yashoda Mata was trying to bind Lord Krishna to the motor. और हम इस दामोदर लीला का भी स्मरण कर सकते हैं जब यशोदा माता कृष्ण को इस उखल से बांधने का प्रयास कर रही थी. And Vishwanath Chakravarti Thakur, when he describes this Leela, he writes in the purport that this situation when Yashodamata always had these ropes to be 2 finger short, it has particular meaning. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस लीला का वर्णन करते हुए बताते हैं कि यशोदा मैया जब कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी अनेक रस्सियों से, तो और जब वो हर बारी 2 उंगली छोटी पड़ती थी तो उन 2 उंगलियों का कुछ अर्थ है. And this particular meaning is that to achieve success in spiritual life there are 2 conditions. तो इसका यह अर्थ है कि अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसकी 2 कंडीशंस हैं. The first condition is our own efforts in spiritual life. The second condition is Krishna's mercy. तो पहली कंडीशन है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा. And today we meditate on Supreme Lord's intention that He is well-wisher of everyone, means He is ready to bestow His mercy on everyone. तो आज इस श्लोक में हम स्मरण कर रहे हैं कि भगवान सबके सुहृद हैं. इसका मतलब भगवान सब पे अपनी कृपा करने के लिए तत्पर है. He is ready, but you see this story with this lady with ointment. It started from the point when this lady approached Krishna and she actually offered her service to Supreme Lord.
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो महिला है इसके पास एक लेप था, और ये कहानी शुरू होती है कि उसने जब कहा कि ये कृष्ण को ये लेप वह अर्पण करना चाहती है. So basically it means that everything starts from our own efforts, and by these efforts we can attract Krishna's mercy. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब कुछ हमारे प्रयासों से प्रारंभ होता है, और इस प्रयास से हम कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं. At the same time, someone can argue, someone can say that okay, efforts are important, but from where did we get the information what kind of efforts is needed? It was actually mercy that someone told us. So actually mercy goes first, and after this our efforts go. तो कभी कभी ये तर्क भी किया जा सकता है कि आप प्रयास तो कर रहे हैं, मगर आपको किसी ने बताया होगा कि कौन से प्रयास करने हैं. तो जब किसी ने आपको बताया तो वह कृपा है, तो प्रयास नहीं, कृपा पहले आता है. So people can argue it is like the same argument, like what was first, the egg or the chicken. तो ये तर्क किया जा सकता है, मगर ये उसी तर्क जैसा है कि अंडा पहले आया या मुर्गी. Basically it is not so important, because again, in order to succeed in spiritual life, anyway we have to have both. ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में सफल होना है तो आपको दोनों चाहिए ही. So not so much important what we have got first, our own endeavors or mercy, but anyway we need both of them. तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि दोनों में से पहले क्या आता है, मगर हमें चाहिए दोनों. So this lady approached Lord Krishna with this ointment. तो यह स्त्री कृष्ण के पास जाती है इस लेप को लेकर. And Lord Krishna promised that, it is written here in this verse, you will soon gain a great boon. तो कृष्ण उसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा वरदान मिलेगा. So when we try to serve Lord Krishna, there is no loss, we only achieve. तो हम जब कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करते हैं तो हम कभी भी हारते नहीं, हमें हमेशा कुछ मिलता है, कुछ जाता नहीं है. And the process is very simple. You just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. और जो पद्धति है वह बहुत सरल है, हमें सिर्फ भगवान के नामों का ऐसे जप करना है. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu gave this Mahamantra श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह महामंत्र दिया for the age of Kali Yuga. कलयुग के लिए. And he knows his audience, means Kali Yuga people. He knows this audience very well. और वह जो उनके पात्र हैं वो उनको अच्छे से जानते हैं, जो कलयुग के लोग हैं. So this process is very simple, because in Kali Yuga we have quite weak memory. So what does this Mahamantra? It is just 3 words, 3, just in particular sequence. तो ये 3 words. बहुत ही आसान पद्धति है, क्योंकि कलयुग में हमारी जो बुद्धि है वो बहुत ही कमजोर है, स्मृति बहुत कमजोर है, तो इसमें केवल 3 ही शब्द हैं. One has just to memorize in which sequence these 3 words go and chant this holy name blissfully. बस हमें ये याद करना है कि इन 3 शब्दों को कैसे क्रमशः बोला जाता है, और हमें इनका जप करना है और खुश रहना है. But the motivation is to chant holy names again. It is not that we can generate this motivation in our hearts. It also comes in our life by mercy. और जो ये भगवान के नाम का जप करने के लिए जो इच्छा है, ये भी अपने आप नहीं आता है, ये भी हमें मर्सी कृपा से मिलता है. Because from materialistic point of view, what they use to chant these holy names, better let's go and let's earn some more money. It would be much more useful, much more better usage of time. तो भौतिकतावादी जीवन में लोग यही सोचते हैं कि भगवान के नाम के जप करने का क्या फायदा, हम कुछ और पैसा कमा लेते हैं, वह समय का ज़्यादा अच्छा प्रयोग होगा. It means what? It means practicality. तो ये प्रैक्टिकल है, ये व्यवहारिक है. Materialistic practicality. ये भौतिकवादी व्यवहारिकता है. Means materialistic people, they usually say that those who are sitting, praying and so on, they're just waiting their time, because nothing they gain. तो भौतिकतावादी लोग ये कहते हैं कि जो बैठ के प्रार्थना करते रहते हैं वे सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है उससे. So the question raises, who is crazy? तो प्रश्न आता है कि पागल कौन है. Who is crazy? Because when we chant holy names, we get this achievement, which is eternal achievement, and we will
this achievement will remain when we will lose this, when we will leave this body. It is our eternal achievement, and materialistic achievements are temporary. We can deal with these achievements only during this lifetime, nothing else. तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमें जो उपलब्धि प्राप्त होती है वो शाश्वत उपलब्धियां हैं। हमारे शरीर के खत्म होने के बाद भी वे हमारे साथ रहेंगे, परंतु जो भौतिकतावादियों की उपलब्धियां हैं वह सिर्फ इसी जीवन के अंतराल में भोगी जा सकती हैं। So it is the benefit of Srimad Bagh. Yes, it is Srimad Bhagavatam. It is not читание Чаритамрита. It is the benefit of Srimad Bhagavatam, because Srimad Bhagavatam enlightens us and it allows us to understand what is beneficial, what is not. तो श्रीमद् भागवतम का हमें फ़ायदा है कि श्रीमद् भागवतम हमें इस चीज़ का ज्ञान प्रदान करती है कि क्या हमारे लिए लाभदायक है और क्या नहीं है। Krishne svadhamo pagate dharma gyanadi bhir saha kalaunashtam drishayasha puranarko dhunodita ha. What does it mean? It means Krishna svadhamo pagate. It means Krishna came back to his abode. Svadhama pagate. Svadhama, his abode. He went back to the spiritual world. तो ये जो श्लोक बोला प्रभु जी ने इसका अर्थ बता रहे हैं कि कृष्ण अपने धाम चले गए हैं। And because when Krishna comes to material world and when he is in spiritual world, he is never alone. He is accompanied by his associates and his energies and attributes, etc. तो कृष्ण इस भौतिक जगत में आते हैं और कृष्ण जब आध्यात्मिक जगत में होते हैं तो वो कभी अकेले नहीं होते, वे अपने शक्तियों के साथ अपने पार्षदों के साथ होते हैं। So it means when he 5,000 years ago when he went back to his spiritual abode, he also went back not alone. तो इसका यह अर्थ है कि 5000 साल पहले जब वे आध्यात्मिक जगत वापस गए तो वो वापस भी अकेले नहीं गए। Dharma Gyanadi Bhiksaha. It means not only Krishna left this planet, but only Dharma, Jnana, Adi, other things also left this planet. धर्म ज्ञान आदि भी सहा, कि कृष्ण जब गए तो वे अकेले नहीं गए, धर्म ज्ञान आदि भी इस जगत से साथ में चले गए। Dharma means religiosity and Jnana means knowledge. धर्म का अर्थ है धर्म और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान। Means there is no need of translation. Okay, very good, very good. So you see, very simple. It means you thought Dharma is Dharma and knowledge is knowledge, right? Such translation. Okay, good. Very nice. तो देख सकते हैं वे कितना सरल है। So they went to spiritual abode, and because of that, the material world was in complete darkness. तो यह सब वापस आध्यात्मिक जगत चला गया और भौतिक जगत पूर्ण अंधकार में वापस आ गया। And immediately when Krishna went to spiritual abode, because Krishna is merciful, he is Sukhridam Sarva Bhutanam, so he gave Bhagavatam, which is brilliant like sun, and this Bhagavatam allows Kali Yuga inhabitants to see something in this darkness of Kali Yuga. तो कृष्ण जैसे ही वापस गए तो क्योंकि वे सबके सुहृद हैं तो उन्होंने यहाँ पे भागवतम दी। भागवतम सूर्य की तरह दीप्तिमान है और वह इस भौतिक जगत के अंधकार को मिटाती है। So this Bhagavatam, which is brilliant like sun, it removes the ignorance from the hearts of living entities. तो इस सूर्य की तरह दीप्तिमान जो भागवतम है ये बद्ध जीवों के हृदय से अंधकार को मिटाती है। And one of the aspects of the ignorance, I forgot, it is from some books, maybe Vishwanatha Chakravarti Thakur or Bhaktivinoda Thakur, but some of our acharyas, he wrote that one of the aspects of ignorance is to think that which is temporary is actually eternal, and which is eternal is actually temporary. तो ये शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या भक्ति विनोद ठाकुर में से कोई लिखते हैं कि जो ये अज्ञान रूपी अंधकार है इसका एक लक्षण है कि व्यक्ति सोचता है कि जो अस्थाई है उसको स्थाई समझता है, जो स्थाई है उसको अस्थाई समझता है। Basically the same description we can find in Bhagavad Gita where tamasic people are described, and basically for them black is white and white is black.
भगवद गीता में भी यही विवरण आता है, जहाँ पे तामसिक लोगों का वर्णन आता है, उनके लिए सफेद काला है और काला सफेद है. But when we read Srimad Bhagavatam and when we serve people Bhagavatam, person Bhagavatam, then we can understand what is temporary and what is eternal. जब हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं और व्यक्ति भागवत की सेवा करते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि क्या शाश्वत है और क्या अस्थायी है. And then we understand where we should invest our time. और तब हम ये समझते हैं कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. So we can, during this Kartika month, we can invest with great enthusiasm. We can invest our time in chanting Shri Shri Damodarashtaka. तो इस कार्तिक महीने के दौरान हम खूब दृढ़ता से और उत्साह से हम श्री श्री दामोदर अष्टकम का उच्चारण कर सकते हैं. Where actually Satyavrata Muni, he says that my only desire is that Lord Bal Gopala should reside in my heart. No other desires I have. सत्यव्रत मुनि ये कहते हैं कि मेरी एकमात्र इच्छा है कि ये जो बाल गोपाल है ये मेरे हृदय में रहें और मेरी और कोई अन्य इच्छा नहीं है. It is the power of authorized prayers that we chant or we recite authorized prayers, and this consciousness of the author of this prayer reflects in our heart. तो ये प्रामाणिक प्रार्थनाओं की शक्ति है कि जब हम प्रामाणिक प्रार्थनाओं को बोलते हैं तो जो उसके रचयिता हैं उनकी जो चेतना है वो हमारे हृदय में भी प्रकट होती है. And we become benefited because of that. और हम इससे लाभान्वित होते हैं. Hare Krishna. हरे कृष्ण. If you have questions, please ask the questions. अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए. Yeah. हरे कृष्ण गुरुजी, नाइस वंडरफुल क्लास. Okay. गुरुजी, एक जो आपने शब्द कहा था सर्वगदा, तो सर्वगदा एक आपने कहा था, तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ करके बताएं कि वो क्या रहता है सर्वगदा. Okay. So the question is that during the lecture you mentioned this word sarvagata. Yes. So can you please explain in brief something about it? Sarvagata, gata, gati. Shri Guru Charane Rati is Uttama Gati. Gati or Gata. Shri Guru Charane Rati, the attachment to lotus feet of spiritual master is Uttama Gati. It is the best way. The best way. Gata. Gata. It is about way. It is about to go somewhere. तो जैसे कि हम गुरु वंदना में देखते हैं श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति. गति जो शब्द है उससे पता लगता है कि जिस श्री गुरु की चरण कमलों में जिसकी रति होती है ये सबसे अच्छा रास्ता है. गति मतलब रास्ता, कहीं जाना. And sarvagata, sarva means all or everything. सर्व मतलब सब जगह या फिर हर चीज. So it means sarvagata means for spiritual soul, all roads are opened, basically. All 8,400,000 species of life. तो सर्वगता का यह अर्थ होता है कि उसके लिए सारे 84 लाख योनियों में जाने का विकल्प है उसके पास, वो कहीं भी जा सकता है. थैंक यू. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Some other questions? Mataji wanted to ask the question. Please give the mic to the Mataji. Mataji, raise your hand higher. हरे कृष्णा प्रभु. Hare Krishna. प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि संडे को कार्तिक के महीने में जल देना और दीपदान कर सकते हैं? So she wants to ask that in the month of Kartik, on Sunday, can we offer deep and offer water? Yes, not only on Sunday, every day we can do. ना केवल रविवार को, हम किसी भी दिन कर सकते हैं. Of course. Prabhuji is saying that we generally don't offer water, pour water in tulsi plants on Sunday, so maybe she wants to ask that. Well, such rule I've never heard. I've heard the rule, and also this, it is, how to say, there are different opinions about that, that on Dvadashi we should not pour water on tulsi plant. There are different opinions about that. And some people, they say we should not do it on Dvadashi. And some people, they say we can. तो
ऐसा कोई नियम तो मैंने नहीं सुना रविवार के बारे में। मैंने जो नियम सुना है वो यह कहता है कि हमें द्वादशी पे जल नहीं देना चाहिए, परंतु इसके बारे में भी विभिन्न मत हैं। कई लोग कहते हैं कि द्वादशी पे जल देना चाहिए तुलसी को, कई लोग नहीं कहते हैं कि नहीं देना चाहिए। And this contradiction can be solved very easily. The principle is, if you are not sure, don't do it. तो इस विरोधाभास को बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता है कि अगर आपको श्योर नहीं है तो मत कीजिए। And about Sunday, I've never heard this prescription. मगर रविवार के बारे में मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। Okay, some more questions or thoughts? और किसी का कोई प्रश्न या फिर कोई विचार? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. His Grace Madhav Murari Prabhu ki. Hare Krishna. Ah? Always? Do I mention always? Almost always? Uh-huh. They will be what? Ah. What do you think? Are they discouraged or not? It was surprising.